morning. Okay, now I am Narsingh Bhadauriya, and now I start EDC, electronic devices and the circuits. Okay, in the EDC, basically, I say we have basic fundamentals of the basically your semiconductor physics. And before going to take your EDC classes, I just basically brief whatever actually I discuss in this subject. In EDC, basically, I say that we need basically little bit physics and chemistry to understand the EDC. And if I talk about like subjects of EDC, and we see along with analog electronics, so we just brief about your EDC as well as analog electronics. We see the diode, we see the analog electronics. In the both the subjects, we see the diode. So actually, little bit no, we confuse with this key. What actually I discuss the diode in the EDC, and what I see basically in the analog electronics. If I take basically the diode, so just we see the application part in the analog electronics. Okay, if we have a EDC, so I said in the EDC we see the internal mechanism of the devices. As we say in the starting, okay, in the EDC we need little bit physics and chemistry. So whenever we go through the word mechanism of the electronic devices, so we require little bit physics and chemistry. Okay. Once we understand basically the basic mechanism of the devices, definitely we understand your basic fundamentals of the device, and then we go through the applications part of the devices. But before going to take the applications, we need to basically understand the mechanism, whatever actually going on inside the devices. Okay, now I just say basically I take here the lecture is most probably for the gate examination, and I say in the gate examination we have 12 to 15 marks which is okay. And this this in the gate examination we have 100 marks, so we see that 12 to 15 is a good marks. Okay, in the last 5 year if I counter these marks, okay, so in this basically subject I say what actually I cover. So I say this, first of all we cover the semiconductor physics, as well as I say then we take the diode, and then BJT and the MOSFET, and we say the MOS capacitor, solar cell. So these topics I'll cover in this basically the EDC classes. Okay, so what books I refer here? So I say this, the books I take your Milman Halkias and the Banerjee statements. So we take the two books which are very good books for the your competition examination. So generally we follow these books. You can also follow these books. Okay, so all the syllabus basically include in these books. So now let's start with the semiconductor physics. Okay, as we write earlier, okay, the semiconductor physics. Now see this, before going to take the semiconductor physics, as you say, we require the little bit your basic fundamentals. So we start with the what classification of the temperature. Okay, the classification of the temperature. Classification of temperature. Because to understand the mechanism, what is actually going on inside the diode. So basically we will understand this diode much more better whenever we know the basically how we basically design your diode. Okay, so as you know this in the basically your the college time we have what your p-type semiconductor as well as an n-type semiconductor, then we basically form the diode. So p-type semiconductor as well as we have an n-type semiconductor, okay, then we form the diode. So first of all we need to study your p-type semiconductor as well as n-type semiconductor, and then we take basically the diode. And very important basically the diode for the examinations, for any competition examination, either it is gate examination or other examination. So p-type semiconductor, n-type semiconductor, but whenever we basically try to understand your p-type or n-type semiconductor, so we need basically the semiconductor physics. Now we're going to discuss here semiconductor physics. In the semiconductor physics we take first of all classification of the temperature. So why we go for the temperature? Because the semiconductor devices are very much sensitive for the temperature, because semiconductor is very much temperature dependent. So every time whenever we discuss your device, your material, so we need first of all temperature. Okay, what temperature I am just actually discuss the nature of the or the characteristics of the devices. So now I say this, we have a classification of the temperature.
So I just say this, we have first of all we say that we have absolute temperature, absolute temperature. So this is, sometimes I say this reference temperature. Okay, reference temperature, reference temperature, like this is minus 273 degrees centigrade, or I say this 0 Kelvin. Okay, this, whenever we have a temperature in degree centigrade, I just put 273, it become, okay, I say then Kelvin. Okay, now see, we have what, next I take room temperature. Okay, room temperature. So whatever room temperature, so I take like standard this 27 degrees centigrade. If I just talk about the Kelvin, so it become 300 Kelvin. Okay, now I say, we have what, ambient temperature. So what is the meaning of ambient temperature? So the meaning of the ambient temperature is basically the surrounding temperature. Basically, I say the surrounding temperature. This is, I take in the engineering 17 degrees centigrade. If I talk about the Kelvin, it become 290 Kelvin. So this is 290 Kelvin, or I say the 17 degrees centigrade. So this is temperature. So sometimes whenever I discuss your like materials, so basically I say, we need temperatures, because this either we discuss your devices, or we discuss like your semiconductor physics, or whatever the material we have. So I need basically the reference temperature, as well as it is the temperature. So basically I need the temperature whenever I basically discuss your devices. Now I start. So see this. Now I take basically the thermal voltage. So what about the thermal voltage? So थर्मल वोल्टेज के बारे में अगर बात करें हम, सो इफ आई जस्ट टेक द थर्मल वोल्टेज, so thermal voltage means, I say this, the volt equivalent temperature means, I say this, what is the voltage equivalent to temperature, टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग क्या वोल्टेज होगा, दिस इज बेसिकली द थर्मल वोल्टेज. नाउ आई टेक vt is equal to, this is just 12th class, I say this k bar t by q, k bar t by q. Okay, now I say this k bar, in this k bar I take the Boltzmann constant, the value is this 1.38, 10 to the power minus 23 joule per Kelvin. Okay, so this is, we have, I say this k bar, and here I say this temperature in Kelvin. Okay, so I take the temperature in Kelvin. Okay, and q, this magnitude of charge, and which is q is equal to 1.6 10 to the power minus 19 coulomb. Okay, this is VM. Whenever I just put here k bar and q, you will get the Vt is equal to, I say, it should like T upon 11,600. Now, if you're interested to calculate your Vt at room temperature, if I just take the Vt at T is equal to 0 Kelvin, so what is this? So Vt is equal to, I say this 0 volt. What is the meaning of 0 volt? Means, I say, whenever I take the Vt at 0 Kelvin, means, I say, we don't have any thermal energy. We don't have any thermal energy. Okay, or I say 0 volt. Now if I take T is equal to 300 Kelvin, so what is this Vt? So Vt is equal to, I say this, if I just put 300 Kelvin, so it become, this, it become 0.0259 volt, 0.0259 volt. Okay, if I just convert it into millivolt, so it should be like Vt is equal to 25.9 millivolt. Okay, so this is very much close to 26. So whenever we need in the analog electronics or the EDC classes, so generally I take a room temperature, the Vt is equal to 26 millivolt whenever we solving the problem. So try to remember this Vt at room temperature, because frequently we use whenever we solving the problem. So we need basically the Vt is 26 millivolt, and I know this, the Vt at 26 Vt is 26 millivolt at room temperatures. So see this. Now this is Vf. And here also we define the K. So we have a K as well as K bar. So what about the K? So I say this K bar is basically, first of all, is 1.38 10 to the power minus 23 joule per Kelvin. Now if I take the K, so K is equal to, I say, 1 point, not 1 point, this is 8.62 10 to the power minus 5 electron volt per Kelvin. So sometimes we use K bar and K. So in the basically the EDC classes, so I say this k bar is, I just change the unit here and it become electron volt per Kelvin, and I say this 1 electron volt is equal to 1.10 to the power minus 19 joule. So this is 1 electron volt. So 1 electron volt is equal to 1.6 10 to the power minus 19 joule. Okay. So sometimes a student asks, what is the meaning of electron volt? So I say this electron volt is nothing but just a small unit of
your energy. Like I say, this joule is the big energy, big unit of energy, and electron volt is a small unit of energy. So like we say, we have a centimeter, micrometer. Like kilometer is a big unit of distance, and the micrometer as well as nanometer is small unit of distance or length. In a very much similar fashion, electron volt is also the unit of energy, and which is a small unit of energy. And I take like this electron volt per Kelvin. So frequently we use this K bar as well as this K in the basically the classes. So try to remember this K bar as well as remember this VT. VT is 26 millivolt at room temperature. Okay. Now I take basically the classification of the element. Just I brief the classification of element. Basically, I see this elements, basic idea of the elements in the 12th class. So I just start like this. So I just provide the basic idea of the elements. Now, if I take, the classification of element. So we have a three type of element in the basically in the real world. I say this. We have first of all, insulator. So insulator. Then we say we have a semiconductor. And the third one, I say this. I take conductor. So we have insulator, semiconductor, and conductor. So now I little bit explain what about the semiconductor. Basically, we see in the 12th class, so we take little bit faster and just brief what is the meaning of insulator, semiconductor, and conductor. Because my interest is only semiconductor. Because I am going to discuss your semiconductor physics. So first of all, we take insulator, semiconductor, conductor. So little bit I explain insulator, then conductor, and we take semiconductor is also first of all 12th in standard. Then we take in very much detail semiconductor because my interest is only the semiconductor, because we see the semiconductor, then we manufacturing the devices through semiconductor, then understand your semiconductor devices in very much detail. Okay, now try to understand insulator. So what is insulator? As you know from the 12th class, insulator is the material which do not basically allow the flow of currents, which do not allow the flow of any current. I say in the semiconductor we don't have any free charge carrier, and we don't have any free charge carrier, and because of like absence of free charge carrier, so we expect that there is no conductivity. So we say we don't have any free charge carrier, no free charge carrier. I say this, no free charge carrier. And I say this this no free charge carrier, as well as this energy band gap is also very large, which is greater than 5 electron volt. As you know from the 12th class, every material in the real world has some atomic structure in that fashion. And I say this is my nucleus here, this is a nucleus, this is nucleus, and according to the like configuration, we have what electrons in the cells, and this electron is basically called the valence electron. This is valence electron. And this in the insulator we don't have any free charge carriers. What is a free charge carrier? So this is atoms, one atom in the semiconductor material. So we have a number of atoms in the semiconductors. So number of STD says, like X-ray 3 says that every insulator, semiconductor, and the metal has a crystalline structure. So this is, we have atoms, and we have a what number of like crystalline pattern we see. So I say this there is a no free charge carrier in basically your semiconductor in insulator, because I say in the 12th class we see this is F is inversely proportional to distance. So sometimes I say this, we don't have like free charge carriers, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि बिकॉज आई नीड, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को फ्री कराने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए टू फ्री द इलेक्ट्रॉन्स. सो वी से कि कहीं ना कहीं हम इसमें इसका इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं करा सकते हैं, क्योंकि मेरे को जो एनर्जी चाहिए वो ज़्यादा चाहिए. और आपको पता है कि सर यहाँ पे जो एफ है और जो डिस्टेंस है वो कुछ इस तरह से रिलेटेड है. तो कई बार आप ऐसे कहते हैं कि इन केस ऑफ बेसिकली द इंसुलेटर मेरे पास एनर्जी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, तो हम इसको फ्री नहीं करा सकते हैं. सो मेरे पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं है, इसमें कंडक्टिविटी ज़ीरो रहती है. और साथ के साथ अगर बात करें इसमें और भी
इसमें जो बॉन्डिंग होती है, क्योंकि आपको पता है कि अगर आपके पास ये एक एटम है तो सराउंडिंग में दूसरा एटम होगा, तीसरा एटम होगा, चौथा एटम होगा, तो सराउंडिंग में जब एटम होगा तो उस एटम का क्या होगा, दूसरे एटम के साथ भी क्या होगा, कहीं ना कहीं एक बॉन्ड होगा। तो बात आती है कि सर बॉन्डिंग कौन सी है, तो आई से दिस वी हैव व्हाट, यहाँ पे जो बॉन्डिंग मिलेगी दिस इज वी हैव व्हाट, आयनिक बॉन्डिंग। तो आयनिक बॉन्डिंग है। दूसरी बात ये है कि सर बात करें अगर हम यहाँ पे कि जैसे कि मेरे पास एनर्जी बैंड डायग्राम है, दिस इज वी हैव व्हाट, कंडक्शन बैंड है, ये मेरे पास कंडक्शन बैंड है, ये वैलेंस बैंड है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो गैप बहुत ज्यादा होता है, ये इजी आपका बहुत ज्यादा है, तो इजी ज्यादा होने की वजह से कोई भी आपके पास यहाँ पे फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता है, तो ये पूरी तरह से क्या रहता है, इम्पटी रहता है, पूरी तरह से इम्पटी, पूरी तरह से खाली, इसमें कोई भी फ्री चार्ज कैरियर पूरी तरह से फिल्ड है। तो जाहिर सी बात है अगर मैं आपसे बात करूं तो आप बिल्कुल कह सकते हैं सर कोई भी इसमें करंट फ्लो होने का कोई चांस ही नहीं। तो आई कॉल द इंसुलेटर एंड वी सी ऑल दिस थिंग इन द बेसिकली द 12th क्लास। खैर देखिए ध्यान से अगर मैं एग्जांपल की बात करूं, सो दिस इज एम्प्टी, दिस इज फिल्ड, completely filled, so all the electrons are resides in the valence bands, we don't have any free electron in the conduction band. Now I say what is basically the examples of the semiconductor, sorry, insulator. So examples I say this like wood, air, SiO2, these are the example of your insulator. Okay, now we take basically this is not my interest insulator, so I just little bit provide the idea of insulator. Now I take the semiconductor. So the what is the semiconductor? तो अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो सेमीकंडक्टर क्या है, तो सेमीकंडक्टर जो आपका है वो है कहीं ना कहीं लाइक, फर्स्ट ऑफ ऑल आई टेक द डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन की बात करें तो आप ऐसे बोलेंगे सर सेमीकंडक्टर जो है ना एक ऐसा मटेरियल है जिसकी कंडक्टिविटी जो होती है इंसुलेटर से थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन अगर मैं बात करूं कंडक्टर से तो कंडक्टर से क्या होती है, थोड़ी सी कम होती है, बट इंसुलेटर से थोड़ी सी क्या होती है, कंडक्टिविटी ज्यादा होती है। अच्छा, मेरा जो इंटरेस्ट भी है वो भी सेमीकंडक्टर है, क्योंकि हमें जो डिवाइसेस हैं, मेरी जो डिवाइसेस बनेंगी वो एन टाइप पी टाइप से बनाएंगे, तो हमें जो मेरा इंटरेस्ट, मेन इंटरेस्ट है वो सेमीकंडक्टर। तो ज्यादातर जो हम बात करेंगे इस पूरी क्लास में वो सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेंगे। तो क्या स्टूडेंट पूछता है सर आप इंसुलेटर क्यों बता रहे हो, कंडक्टर क्यों बता रहे हो, क्योंकि आपको इंसुलेटर कंडक्टर के बारे में थोड़ा सा आइडिया होना जरूरी है। जैसा कि आप जानते हो कि सर पूरी की पूरी जो डिवाइसेस हैं वो आपकी किसकी बनी है, सेमीकंडक्टर मटेरियल से। तो जैसे अगर मैं सेमीकंडक्टर की बात करूं तो पहले मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं, बेसिक्स आइडिया, उसके बाद धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, आपका एक डिटेल वर्जन आपको प्रोवाइड करेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स का। ओके, सो देखिए ध्यान से, अगर जैसे मैं आपसे बात करूं यहाँ पे कि सर सेमीकंडक्टर, तो जैसा मैंने भी बोला आपसे डेफिनेशन क्या है कि इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो मेटल से तो क्या होगी, कंडक्टर से तो क्या होगी, कम होगी, बट इंसुलेटर से ज्यादा होती है। जैसे कि आपको पता है इंसुलेटर में कोई कंडक्टिविटी होती ही नहीं है। खैर, तो बात आती है कि सर जैसे मैंने कहा कि चाहे कोई भी आपका सेमीकंडक्टर हो या चाहे मेटल हो चाहे आपका इंसुलेटर हो, सारे के सारे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में ही रहते हैं। तो आपके पास लाइक एक एटम होगा, दूसरा एटम होगा, और सारे सारे एटम जो होंगे वो क्या होंगे, एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे। अब बात आती है कि सर इसमें कौन सी बॉन्डिंग है, कैसे होंगे सर, या पहले यही बात करूं कि सर ये कौन सा सेमीकंडक्टर अगर ग्रुप में जाए तो कौन से मतलब ग्रुप के एलिमेंट्स को आप सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं सर यहाँ पे क्या होता है कि आपके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ऐसे मैं बोलूंगा, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने होते हैं, अगर आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4। तो समटाइम्स आई से दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 4 मींस जो फोर्थ ग्रुप होता है, फोर्थ ग्रुप वो कौन सा आपका है, सेमीकंडक्टर। बात आती है सर इसमें कि कौन कौन सी इसमें सर बॉन्डिंग होती है, सॉरी, तो बॉन्डिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होगा सर, कोवेलेंट बॉन्ड होगा सर। ठीक है सर, इसके बाद अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग के बाद अगर बात करें तो क्या सर इसमें कंडक्टिविटी होती है, तो आप ऐसे बोले सर हाँ इसमें कंडक्टिविटी मिलेगी आपको। सो वी हैव अबाउट little bit you see this free charge carriers at room temperature, so we cannot say this is we have a zero conductivity, so we observe little bit conductivity whenever we discuss at room temperature. यहाँ पे जो एनर्जी बैंड गैप होता है विच इज अ स्मॉल एनर्जी बैंड गैप नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सो इजिली वी कैन फ्री द कैरियर्स। दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड। तो ये मेरे पास कंडक्शन बैंड है, ये मेरे पास वैलेंस बैंड है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे पास वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है। तो अगर मैं जैसे कि टी इज इक्वल टू 0 केल्विन की बात करें तो 0 केल्विन पे तो क्या होगा, बिल्कुल क्लियर है सर, कोई भी एनर्जी नहीं होगी तो कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं होगा, तो पूरी तरह से ये क्या रहता है, फील्ड रहता है, और ये पूरी तरह से क्या रहता है, एम्प्टी रहता है। So this is empty and this is filled. तो ये पूरी तरह से filled है, ये पूरी तरह से empty है। Okay, so this is filled as well as empty. Okay.
नाउ सी, जैसा कि मैंने कहा कि इसका एनर्जी बैंड गैप काफ़ी कम रहता है, तो अगर वैसे रूम टेम्परेचर की बात करें, तो रूम टेम्परेचर की बात करते हो, अगर आप जो टेम्परेचर बढ़ाते हो मान लीजिएगा, तो 0 केल्विन में तो कोई थर्मल एनर्जी होगी नहीं, तो जाहिर सी बात है कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा। अगर बॉन्ड नहीं टूटेगा तो जाहिर सी बात है इसमें कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स नहीं होंगे। बट इफ आई जस्ट टॉक अबाउट द व्हाट, लाइक T इज इक्वल टू 300 केल्विन, तो अगर मैं 300 केल्विन की बात करें तो मेरे पास थोड़ा बहुत थर्मल एनर्जी आ जाएगी। तो मेरे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ पहुंच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। सो डेफिनेटली वी एक्सपेक्ट द सम कंडक्टिविटी, यहाँ पे मेरे पास कुछ कंडक्टिविटी आ जाएगी। Okay, so these are basically the free electrons. I say this is free electrons, and here I say this is what, absence of electron. These are called the free electrons, and here I say this is absence of electrons. So this is vacant place. Sometimes say this is absence of electron. This is absence of electron, and I say this sometimes I call the holes. The absence of electrons, I say this holes, or here I say this is what, free electrons. So these free electrons are responsible for the current. In the, basically the little later I take here the holes are also responsible for the current. So इलेक्ट्रॉन और होल दोनों दोनों यहाँ पे क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर में करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। तो बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट। बट अभी शायद मैंने 12th क्लास की अगर बात करें तो हमें ये पता था कि सर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, होल कैसे रिस्पॉन्सिबल होंगे मैं आपको थोड़ी देर बाद बताने वाला हूँ। ओके नाउ, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सर सेमीकंडक्टर क्या होता है, इसमें थोड़ी बहुत कंडक्टिविटी होती है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या होता है, फ्री कैरियर्स मिलते हैं रूम टेम्परेचर में, जबकि इंसुलेटर में कोई फ्री कैरियर्स नहीं थे मेरे पास। तो इस वजह से क्या होते हैं यहाँ पे मेरे पास कहीं ना कहीं आप ऐसे कह सकते हैं कि कंडक्टिविटी मिलेगी। अब बात आती है सर इसमें, देखिए ध्यान से एक छोटा सा और मतलब पहलू है जिसपे हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पे जो बैंड गैप और जो टेम्परेचर का रिलेशन है वो कहने के इनवर्स है। Here I say this, the temperature और जो बैंड गैप है which is related to basically the inversely related, I say this Eg is basically inversely proportional to your temperature. Means I say this, whenever we increase the temperature we say the band gap is decreases. देखिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है भाई, जाहिर सी बात है अगर मैं आपसे बात करूं कि कहीं ना कहीं अगर आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉन्ड टूटने का जो मतलब बॉन्ड जो ब्रेक हो रहा है उसको टेम्परेचर कहने की सपोर्ट करता है। अगर टेम्परेचर सपोर्ट करेगा तो जाहिर सी बात है, मुझे अगर मैं आपसे कहूँ सर मान लीजिएगा एक मेरे पास सेमीकंडक्टर, ये दूसरा सेमीकंडक्टर मेरे पास, ये अगर टेम्परेचर 300 केल्विन पे है और ये 400 केल्विन पे, दोनों सेमीकंडक्टर है, और मैं आपसे कहता हूँ कि सर यहाँ पे मेरे को बॉन्ड को ब्रेक कराना है, मान लीजिए कोई बॉन्ड ऐसा है जो 300 केल्विन में नहीं ब्रेक हुआ है, तो अगर बॉन्ड को ब्रेक कराना तो मेरे को ज़्यादा एनर्जी लगेगी। लेकिन अगर इसकी बात करें तो कहीं ना कहीं वही जो इलेक्ट्रॉन होगा या जो बॉन्ड होगा ना वो पहले से थोड़ा थर्मली ज्यादा एक्साइटेड होगा, तो मेरे को कम एनर्जी लगेगी। तो मैं कई बार ऐसे कहता हूँ थ्योरेटिकली ऐसे दिस कि कहने की टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो बैंड गैप क्या होता है आपका कम होना स्टार्ट हो जाता है। समझ गए? ओके, सो यहां तक एकदम क्लियर है, ठीक है सर आगे बढ़ते हैं। सो नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड another thing. If I just take about the example, so what is the example of? So examples are very simple. I take the examples, like very relevant examples are silicon, germanium. These are the example of the semiconductor. So generally I take the silicon and germanium as a semiconductor material. Okay, now if I take basically the little bit your conductor. So what is a conductor? So conductor, I say this shows very high conductivity. So all the metals are conductors. जितने भी आपके metals होते हैं सारे conductors, इनकी conductivity जो होती है बहुत ज़्यादा होती है conductivity. Because I say the number of charge carriers, free charge carriers are very high. But in case of insulator we don't have any free charge carrier. But in case of semiconductor we have a little bit free charge carrier. And in case of metal we have a large number of free charge carriers. So now again I say this, the X-ray theory basically explain that the metal and the semiconductor has a crystalline structure. So each atoms are basically bonded together. So what is the bonding? So I say this here, the bonding is basically metallic bonding. So here I say this metallic bonding, and I say this metallic bonding. तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग मिलेगी मेटेलिक बनेगी। साथ के साथ अगर मैं बात करूँ सर कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स आपके क्या होंगे, मेटल होंगे। सो इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 3 से कम होता है। So वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन 3, लेस देन इक्वल टू 3। मेटेलिक बॉन्डिंग सारे मतलब पीरियोडिक टेबल के जो तीसरे ग्रुप से तीसरा ग्रुप है उससे कम सेकंड या फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट सारे क्या हैं आपके मेटल्स। सो दिस इज वी हैव नाउ another thing. If I say what is a free charge carrier, so amount of free charge carrier, I say this, the amount of free charge carriers, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें होते हैं वो कितने 10⁻28 पर मीटर क्यूब। तो एक बहुत हाई नंबर होता है, मतलब बहुत ज्यादा नंबर है, मतलब आप खुद ही देख सकते हैं 1 मीटर क्यूब में 10⁻28, तो एक हाई कंडक्टिविटी होता है। साथ के साथ हमने देखा था 12th क्लास में क्या कि यहाँ पे जो आपका क्या होते हैं, जो कंडक्शन बैंड है यहाँ से यहाँ तक है और वैलेंस बैंड यहाँ से यहाँ तक है। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो कंडक्शन बैंड है और साथ के साथ वैलेंस बैंड दोनों के दोनों क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। कंडक्शन बैंड एज वेल एज व्हाट, वैलेंस बैंड ओवरलैप
ओके, सो वी डोंट हैव एनी लाइक फॉरवर्ड गैप, नो वी डोंट हैव एनी एनर्जी गैप, कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता है पूरी तरह से। क्या होता है ये आपका गैप? क्या होता है? जीरो गैप होता है। सर अगर एग्जांपल की बात करें तो आपने कहा सर यहाँ पे एग्जांपल क्या हो जाएंगे आपके, जैसे कि अगर बात करें हम गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम होगा, ये सारे एग्जांपल्स हैं। किसके एग्जांपल हैं सर आपके? ये मेटल के एग्जांपल्स हैं या कंडक्टर के एग्जांपल। तो क्लासिफिकेशन एलिमेंट्स में मैंने क्या देखा? इंसुलेटर के बारे में हल्का फुल्का आइडिया लिया, साथ के साथ मैंने सेमीकंडक्टर के बारे में बताया, और मैंने कहा सर मेटल के बारे में बताया। जबकि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि सेमीकंडक्टर मेरा इंटरेस्ट है, बट लिटिल बिट आई एक्सप्लेन योर बेसिकली insulator as well as metal, but I say this here, the semiconductor is my interest. Now, before basically going to take the semiconductor is very much detail, so I just explain here first of all transport phenomena, because we know the metal as well as semiconductor has a basically carriers. So first of all, basically going to take your semiconductor physics, I take transport phenomena. So in the transport phenomena, I say first of all we take the mobility. तो सर मोबिलिटी क्या है? बात आती है मोबिलिटी, नाम से ही समझ में आ रहा है मोबिलिटी इज व्हाट। सो मोबिलिटी वर्ड इज बेसिकली टेकन फ्रॉम द टर्म मोमेंटम, जिसका सीधा मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं ये ऐसा कहना चाहते हैं कि सर आपका जो कैरियर है वो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है। सो लाइक मोबिलिटी, मोमेंट ऑफ एबिलिटी। So I say this mobility word is taken from the momentum, and which basically explain how fast charge carrier moving from one place to another place. So this is basically the mobility. Now I say mobility. So mathematically I define the mobility in that fashion, which is the drift velocity. Drift velocity. Okay. And divide by electric field. This is field here I say. So the electric field. And if I just write this, mu is equal to, I say this Vd upon E. Sometimes students getting confused with this, the drift velocity. So why we call the drift? Because I say here I just apply the force. So I call the drift. So why we call the velocity? It's because we take here velocity. Roughly we take speed, but in the velocity I say, very simple, I say this velocity word I take in only whenever we have like vector quantity. Because I say mobility. What is the mobility? कि आपका जो चार्ज कैरियर है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में कितनी स्पीड से चल रहा है। तो मेरे पास ये सेमीकंडक्टर है या फिर मेटल है, कैरियर्स मेरे पास है। जैसे में इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे या फिर जैसे इसमें वोल्टेज लगाते हैं, सो बेसिकली वी अप्लाई द व्हाट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज प्लस टू माइनस। सो व्हाट एक्चुअली इज बेसिकली क्रिएटिंग अ फोर्स, दिस एफ इज इक्वल टू ई। सो कहीं ना कहीं मैं ऐसे कह सकता हूँ कि जब भी हम इसमें फील्ड अप्लाई करते हैं तो आपका जो कैरियर किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता है, और जितनी स्पीड से चल रहा है, जिस स्पीड से ये मूव कर रहा है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड द मोबिलिटी। एंड आई डिफाइंड मैथमेटिकली म्यू इज इक्वल टू वीडी अपॉन ई। Okay, now if I talk about this unit, so here I say this Vd is velocity, so basically I said is centimeter per second. So here generally I take centimeter per second because length is small. Electric field is basically the volt per centimeter, because I said electric field is equal to V by L. So it should be volt per centimeter. So this is volt per centimeter. So what about the mu? So mu is equal to Vd upon E. It should be like centimeter square volt to second. So this is the unit of this. Okay, so basically I take mobility in frequently in your basically the semiconductor physics. Okay, now I say we have a 2 points related to your mobility. The one point is basically I say the mobility is basically decreases with the temperature. We have a relation is like this, mu is proportional to e to the power minus m. As you see this here, m is constant, m is constant, m is constant. And I say the mu and the temperature is basically inversely related. As temperature increases, you see this m is always greater than equal to 1, greater than 1. जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे मोबिलिटी आपकी क्या होती है? कम होती चली जाती है। तो कई स्टूडेंट पूछता है कि सर ये कैसे कम हो रहा है? तो जाहिर सी बात है, अगर आप थोड़ा समझने की कोशिश करें तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि अगर मान लीजिएगा आपके पास सेमीकंडक्टर मटेरियल, अगर सेमीकंडक्टर मटेरियल है, अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा कि इसके अंदर जो आपके पास एटम्स हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पास जो कैरियर्स हैं वो टेम्परेचर के साथ थर्मली एक्साइटेड होते हैं। अगर उनका एक्साइटेशन बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, तो उनका वाइब्रेशन इंक्रीज करता है। अगर आपका वाइब्रेशन इंक्रीज करेगा तो एक बात एकदम क्लियर है कि अगर इसमें आप फोर्स लगाते हो तो कहीं ना कहीं इनको किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, या ऐसे कह सकते हो इनकी जो स्पीड होगी वो स्लो हो जाएगी, कम हो जाएगी, वाइब्रेट करेंगे। आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो इनका क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं मूवमेंट क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो आप कई बार इसको इस तरह से कहते हो, म्यू इज बेसिकली प्रोपोर्शनल टू आई से दिस 1 अपॉन टी टू द पावर m। टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मोबिलिटी कम हो जाती है, एंड दिस इज वी हैव मैथमेटिकल रिलेशन।
एंड साथ के साथ इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि यहाँ पे जो म्यू है उसका जो टेम्परेचर आता है कैसा रिलेशन है, इनवर्स और कैसा नॉन लीनियर रिलेशन है. सो दिस इज भी है. Okay, so this is the first parameter, or I say term, in transport phenomena mobility. So I explain like this. Now I take the another term which is called the conductivity. So what is the conductivity? So we see in the 12th class, मतलब हमने इसको 12th class में पहले ही देख रखा है कि what is the conductivity. तो अगर हम conductivity की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ऐसे कह सकते हैं कि सर व्हाट इज कंडक्टिविटी. तो कंडक्टिविटी की अगर बात करें, मान लीजिए आपके पास सेमी कंडक्टर है, तो दिस इज वी हैव अ सेमी कंडक्टर. अगर सेमी कंडक्टर की बात करें तो जाहिर सी बात है कंडक्टिविटी का क्या मतलब हुआ कि सर ये जो आपका मटेरियल है, चाहे मेटल हो चाहे सेमी कंडक्टर, इसमें कितनी करंट फ्लो हो सकती है. कंडक्टिविटी मीन्स द करंट कैरिंग एबिलिटी ऑफ द मटेरियल. कोई मटेरियल कितनी करंट को फ्लो करा सकता है, दिस इज कॉल्ड द कंडक्टिविटी. So if I just take mathematically what is the meaning of conductivity, so very simple meaning अगर हम बात करें आपसे तो conductivity का सीधा मतलब यहाँ पे है I say this current carrying ability of the material, कितनी current इससे flow कराई जा सकती है, ये meaning है इसका conductivity का. So if I define the mathematically conductivity which is represented by sigma, so I say this number of charge carrier, number of charge carrier, number of charge carrier multiplied with I say this magnitude of charge, magnitude of charge. And then we say we have a what mobility. Okay, so number of charge carrier as well as I say this mobility, number of charge carrier, mobility and magnitude of charge. Now I write this sigma is equal to I say this n. If I say for the case of metal, for metal I say I take the number of electrons is n here, so n q mu n. So sigma is equal to n q mu n. Okay, for metal. Now if I take what is the resistivity, if I say the word resistivity is just I say this specific resistance of the material, or I say sometimes mathematically the rho is 1 upon sigma, like rho is 1 upon sigma resistivity, and here I say this 1 upon nq mu n. And this is just I write for the what your metal, because in semiconductor I just take very brief idea. So whenever I discuss in very much detail semiconductor, so I define the conductivity, because I say in the semiconductor the two particles are responsible for the current, one is hole and is an electron, but in metal we see only the electrons are responsible for the current. So I take the conductivity like n q mu n, and here rho is equal to 1 upon sigma n, and this resistivity is just reciprocal of your conductivity mathematically. Okay, now I take, see what is basically the current density. So the current density, what is the current density? So the current density, in the 12th class, J is equal to I say this sigma E. Okay, sigma E, this is Ohm's law. Okay, J is equal to sigma E. E is field, whenever I apply the field, n q mu n into E. And again I recall this is I write for the metal. Whenever we have a semiconductor, so little bit I say this is changed because we have another particle which is hole, which is responsible for the current. Now so this J is equal to n q mu n into E. See, now take another thing. Okay, what is the current? If I just take the current, so current is very simple, because the current density, I say this current per unit area. So I say the unit is what, ampere per centimeter square. So what is the current? So current is equal to J into E, J into A, sorry, J into A. So here I say this n q mu n into A into area. So this is just current, and again I say this is just for metal. Okay, now if I say what is resistance, so resistance R is equal to rho L upon A. So what is the R? Basically the rho. So the rho is equal to I say this RA upon L. So what is the unit of rho? Ohm centimeter square per centimeter. So which is ohm centimeter. This ohm centimeter. So what is the unit of basically the resistivity? Ohm centimeter. And what is the unit of conductivity? So conductivity is basically rho is equal to, so conductivity is what, 1 upon rho. So this is ohm centimeter inverse. This is we have. So I say this mho per centimeter. So this is we have. So ohm centimeter, mho per centimeter, or sometimes I call Siemen per centimeter. So Siemen per centimeter, mho per centimeter. So J is equal to sigma into E, n q mu n into E, ampere per centimeter square. I is equal to J into A, n q mu n into E area. So R is equal to rho L upon A, and the rho is equal to, I say the rho is equal to 1 upon, sorry, sigma is equal to 1 upon rho. So I just write down the unit Siemen per centimeter, mho per centimeter. Okay.
If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.